before I start into what market profile is, I'll just give you a quick sort of go through exactly market profile करता क्या है. How is it different from candle charts? Candlestick. So candlestick charts आपको open, high, low, close बताते हैं, right? What market profile does is market profile does the same thing but in a visually different manner, right? What it does is it will tell you the time, price, and volume, the three things that Mr. Stedelmeier stated, those three things in a single chart, right? तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं एक साथ, then you can take more, more strong trades, and then more you have a better chance to be successful, right? So now we get into how our market profile charts actually plotted. The first thing that we need to do is let's open a normal, step one will be to open a normal candlestick chart on a 30-minute time frame. तो for example मैंने ये वाला पूरा चार्ट लिया हुआ है, candlestick chart. This is a 30-minute Bank Nifty spot chart for 6th June 2022. ठीक है. Right. उसके बाद मैंने क्या किया है, I have converted every single candle into a bunch of letters. And these letters go from A all the way to M. The first candle will be denoted by A, high से लेके low तक. So as you can see in the image below, A is running from the high of the candle to the low of the candle. Okay. Right? The next candle will be B, the next candle will be C, D, E, F, all the way to M. ये size जो होता है इसका block का, ये same होता है सब में? हाँ, so ये जो size होता है एक block का, this is actually configurable. You can configure it on your own in the software. Okay. But by default, it it can be around 10 points, 20 points. It depends on the script that you're trading. तो हर stock का अलग होगा ये block का size? Right. आपको visually कितना clear लग रहा है ये, आपको उस हिसाब से अपना charting platform पे इसको configure करना पड़ेगा. तो मुझे हर stock में ये setting change करना पड़ेगा? एक बारी आपको for the very first time आपको ये change करनी पड़ेगी. And then once the software knows कि हाँ इस stock की ये setting है, then you don't have to do it anymore. अच्छा ठीक है. Right. So अब हमने पहले और दूसरे step में क्या किया है? पहले step में हमने candlestick charts लिए हैं. In the second step, we have converted those candlestick charts into a bunch of letters that range from the candle high to the candle low, and they go from A all the way to the letter M. Now on the third step, this is very interesting. एक मिनट, sorry to interrupt you. एक बार No, वापस please. आइए ना. मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. ये आधा घंटे का कैंडल है? हाँ जी. और ये पूरा दिन भर का वो ट्रेड है क्या? Right. उसी को आपने कन्वर्ट कर दिया आधा घंटा का. Correct. Got it. ये अपने आप ही कन्वर्ट हुआ है? हाँ, the software takes care of everything. You don't have to do anything. Software अपने आप high to low तक A letter इसको denote कर देता है, second candle को B denote कर देता है, and this goes from A, B, C, D, F to all the way. कलर का क्या relevance है? कलर का कोई relevance नहीं है. This is just to make it visually more appealing. Visually more appealing. That is it. Because कलर देख के हम जज नहीं कर रहे हैं, तेजी का कैंडल, मंदी का कैंडल जो ऊपर है. हाँ जी. कई बार होता क्या है, कलर देख के I mean people can visually be a little more confident of their trades. It's purely a visual appearance thing. और इसको बोलते हैं कि इसको कैंडल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ नहीं बोलते. हर ब्लॉक को हम बोलते हैं TPO. TPO. हर ब्लॉक को बोला जाता है TPO. Time price opportunity. Time price TPO. opportunity. Okay. Right. Letter is. The reason why it is called time price opportunity is that in the same chart we are getting a feel of time. किस प्राइस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है और उस हिसाब से हमारी कितनी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ गुड ट्रेड. किस प्राइस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? Right. वो कैसे पता लगा? किस प्राइस पे कितना, हाँ वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा. अच्छा ठीक है. राइट. ओके. So in the next step we see, this is a very interesting step, step 3. What we do is we basically make all the letters fall on top of each other on the y-axis. The vertical side here on the left is the y-axis. What we do is we take all the letters and we make them fall on top of each other. बरोबर. जैसे टेट्रिस में गिरता है ना, टेट्रिस गेम के अंदर ऊपर से गिरते रहते हैं. Exactly like that. So we make all the letters fall on top of each other. And now clearly this resultant figure that you see where my cursor is, this is the resultant market profile chart, right, of that particular day. Now the best thing about this chart, this is where I answer कि ये different कैसे candlestick charts है. The best thing about this chart is this red line. This red line, this zone, this particular zone is where
the most amount of time has been spent. Of course. Right? Because every block is a 30-minute block. Yeah. Right? So you can clearly see that in this particular price zone, the most amount of time has been spent. Yeah. Now, Mr. Steidelmeier said that he does not trade price, he trades value. And the best way to know value in any market is to know how much time is being spent at a particular price. बरोबर. So for this particular day, इस आज के दिन के लिए ये zone हमारी value हो जाएगी. So this is the value, and this is how market profile charts are actually plotted. Now, the good thing for us is that we have softwares to do the hard work for us. The softwares plot these charts for us, and we can just make them visually more appealing. These charts are automatically plotted in real time. Right? अच्छा, इसमें एक बात बताइए, ये हाफ एन आवर कौन डिसाइड किया? तो आपने डिसाइड किया? ये actually again it was J. Steidelmeier's experimentation. उन्होंने 15 minutes के साथ experiment किया इसको, 30 minutes के साथ किया. Even Mr. Jim Dalton उन्होंने भी experiment किया. He found that 30 minutes is the most visually appealing, and he figured out that 30-minute charts में this works the best. So this is what I've been following, and honestly personally 30 minutes पे I think it works the best. ठीक है. Yes. So moving on. Now we will talk about some basic terms. We saw कि ये market profile पूरा chart है, right? हाँ. So this red line that was in the previous slide as well here. This line, the line of value. This is known as the POC, the point of control. This is the most important thing that market profile charts tell us, right? The point of control is that price where the maximum trading during that day happened, right? Another thing that market profile charts tell us is this big gray area that you can see. The value area has been denoted through this arrow, and this gray area, this big gray area is the value area. What is value area? Value area is basically POC के ऊपर 35%, POC के नीचे 35%. That is denoted as the value area. ये एक बड़ा मोटा एक समेशन है कि इस जोन के अंदर वैल्यू बना है आज. ठीक है. This is the particular price zone. The POC is the particular price point, and this value area is a full zone जहाँ पे value establish हुई है आज की. Now this value area and this POC, once you start looking at it on a day-to-day basis, every day the way it is changing, the way the value area is expanding or contracting, this will give you an immense a plethora of information of how market participants are coming in and trading with each other. Buyers ज़्यादा strong हैं या sellers ज़्यादा strong हैं, buyers कितने aggressive हैं, value नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है. अगर नीचे बन रही है तो इसका मतलब है कि sellers बहुत aggressively आ रहे हैं, और अगर ऊपर बन रही है तो इसका मतलब है कि buyers बहुत aggressively आ रहे हैं. Fair. So after this, और इसका ये जो वैल्यू एरिया का रेंज होता है उससे भी कुछ डिनोट होता है क्या? कि छोटा रेंज है तो इसका मतलब छोटी रेंज में लड़ाई चल रही है. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. छोटे रेंज का मतलब है कि बहुत बायर्स और सेलर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल मिल गया है जिसपे वो दोनों खुश हैं, राइट? दोनों खुश हैं, एग्जैक्टली. वो कंसोलिडेशन चल रही है, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन वी ऑल नो दैट कंसोलिडेशन के बाद किसी एक तरफ एक्सप्लोजन आता है, राइट? इसका मतलब, और वो कंसोलिडेशन तब तक चलेगी जब तक दोनों साइड का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता, राइट? जैसे ही दोनों साइड का स्टॉक खत्म हो जाएगा, द बिजनेस इज ऑल डन. द प्राइस विल अगेन मूव इन वन डायरेक्शन, ईदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, टू फाइंड अ न्यू सेट ऑफ सेलर्स और बायर्स. इट विल गो अप टू फाइंड सेलर्स, it will go down to find buyers, right? This is how auction market theory is tied in with market profile. Once you start looking at the markets through market profile, I think price charts आप देखना बंद कर दोगे. इतना ज़्यादा information ही आपको इससे मिलती है. फील हो रहा है वो, बट मैं नहीं बंद करना चाहता हूँ. पर चलिए सीख तो लेता हूँ आपसे. Right. So very exciting. So now let's move on to an actual software. Which I have been using over the past, couple of years. ये market profile trading view में है? Trading view में है, yes. Trading view में, but users खुद बना के indicators उसमें डाल रखे हैं. This is an official software that you can get in India. अच्छा, मैंने वो भी एक और सॉफ्टवेयर मैंने देखा था, किसी के साथ फेस टू फेस किया था, वो यूज करते थे. Sierra charts? Go charting. Go charting.
गो चार्टिंग में करेक्ट गो चार्टिंग में भी है. So that is basically an entry level market profile charting mechanism. This software on the other hand is a little more expensive. So they also, this is known as Bell TPO. अच्छा, Bell TPO. Yes, they have a wonderful team of coders who have made this platform, and I have been using this. It's very robust, and it's a little bit expensive, but again it does the job very well. कितना रुपए का? ये इसका पैकेज मुझे around 19,000 rupees का पड़ा था. 19,000 रुपया? 19,000 rupees. साल का? It's a lifetime license, so you can keep it. बहुत महंगा तो नहीं है भाई. ये नहीं, कुछ लोगों के लिए जो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते. अरे जो फैक्ट्री लगा रहा है वो करोड़ों रुपया लगाता है फैक्ट्री का वैल्यू क्रिएट करने के लिए. ट्रेडिंग करने जा रहे हो, करियर बनाने जा रहे हो, 19,000 रुपये का सॉफ्टवेयर नहीं, वो भी लाइफ टाइम. Anyways, so this is a little more expensive as compared to the Go charting alternative. Go charting wala is a little more cheaper, so you can try out the Go charting one. वो जचता है तो then you can move on to this one. और हम लोग का इसमें कोई लेना देना नहीं. कोई कमीशन नहीं दे रहा हम लोग को इस काम के लिए. ठीक है, बता देना. Okay, I wish.